Hello and welcome to your online English class. This is Megha, and today we will go through the fourth chapter of your snapshot English book, that is Albert Einstein at School by Patrick Pringle. This chapter is an extract from The Young Einstein, and Patrick Pringle is the author of this book. This book is the biography of Albert Einstein, और इसी बुक से इसका एक अंश है, एक पार्ट है, इसका एक एक्सट्रैक्ट है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल चैप्टर के तौर पर हमारे सामने है. Now, as the title suggests, it's about Albert Einstein, the father of modern physics. अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप सभी जानते होंगे. He was a renowned German physicist and he is known for his discovery of the photoelectric effect, for which he won the Nobel Prize for Physics in 1921. But do you know, in his school days he was quite a rebel who did not tolerate the strict school discipline. In this chapter, we see that he did not like school that much because he did not like the traditional methods of teaching there. Moreover, he always felt like he did not fit in. And his teachers, they did not like him too for his straightforwardness. For some of his teachers, he was a poor student and some thought he might be retarded. कुछ टीचर्स को लगता था कि ये बच्चा शायद मेंटली चैलेंज्ड है. क्यों? Because he questioned things and raised valid points. अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुनकर ही हमारे जेहन में एक ऐसे स्टूडेंट की इमेज आ जाती है जो काफ़ी ब्रिलियंट रहा होगा, टीचर्स का फेवरेट होगा. बट इट वॉज नॉट सो. वी लर्न थ्रू दिस एक्सट्रैक्ट अबाउट द ट्रबल्स अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज फेसिंग व्हेन ही वॉज इन स्कूल, एंड वी सी how the greatest mind also had to face struggles concerning their intelligence. The lesson begins with an account of Albert with his history teacher, Mr. Brown, where the teacher asked him about the year in which the Prussians defeated the French at Waterloo. तो एक पर्टिकुलर डेट के बारे में हिस्ट्री टीचर अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछते हैं, एंड एज यूजुअल Einstein does not remember it, to which Mr. Brown points out that the reason for this is because Einstein never bothers to learn them. And Albert justifies that he finds it pointless to digest dates because one can always look them up in books whenever needed. The answer left Mr. Brown dumbstruck for a while. Finally, he replies and tells him that, similarly, most of the things being taught in schools can be looked up in the books, and there's no point in mugging up facts. Einstein, without realizing that the statement was sarcastic, agrees with him. जिन चीज़ों का ऑलरेडी पता लग चुका है या जिन चीज़ों की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, उन चीज़ों को क्रैम करने से क्या फ़ायदा, ये अल्बर्ट का पॉइंट था. अल्बर्ट की ऐसी बातें सुनकर प्रोफेसर जो हिस्ट्री के थे मिस्टर ब्राउन, वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं. एंड ही आस्क्ड, देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल? क्या तुम एजुकेशन पर भी विश्वास नहीं करते? Oh yes sir, I do. I don't think learning facts is education. In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. अब यहाँ पर हिस्ट्री टीचर अल्बर्ट का मॉक करने की कोशिश करते हैं इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास एंड आस्क अबाउट हिज ओन वर्जन ऑफ आइडियल एजुकेशन, कि जो एजुकेशन चल रही है उसको तो आप नकार रहे हो, तो चलो अब आप पूरी क्लास को अपनी आइडियल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए उस पर अपने व्यूज बता दो. एंड अगेन, बीइंग वेरी क्लियर अबाउट हिज आइडिया ऑफ एजुकेशन, Albert explains, I think it's not facts that matter, but ideas. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. Now, what Albert meant to say is that
It's useless to acquire knowledge on dates of battles and number of men that were compromised. What is important is to read and analyze the reasons that were responsible for the battle between the two armies. ऐसी बातें सुनकर जो मिस्टर ब्राउन है he got extremely angry and interrupted Albert's speech and punished him to stay for extra classes. साथ ही वो अल्बर्ट को कहते हैं यू आर अ डिस्ग्रेस आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम. इस पर अल्बर्ट रिप्लाई करते हैं इट्स नॉट माई विश सर. Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. तो कुछ इस तरह से अपने हिस्ट्री टीचर के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन के आर्ग्यूमेंट्स हुए. That afternoon Albert was unhappy when he left school. It was not that the day was bad, but in general, days were getting bad at school, and he hated the thought of going to school every morning. हर सुबह स्कूल जाने की थॉट को ही अल्बर्ट आइंस्टाइन हेट करने लगे थे. His only wish was that his father would take him to Italy along with him, but it was pointless to ask him because he would anyway make him stay here until he had taken his diploma. And his father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. तो जहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन रहते थे वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी वायलेंट था. अल्बर्ट आइंस्टाइन इस चीज़ को माइंड नहीं करते थे कि उन्हें बैड फूड मिल रहा है या फिर लैक ऑफ कंफर्ट है, बट ही माइंड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस देयर. एंड नाउ at this point we are introduced to his friend Yuri, who is also not very fortunate. अब जो यूरी है अल्बर्ट के फ्रेंड, वो अल्बर्ट को रिमाइंड करवाते हैं कि अल्बर्ट को खुश रहना चाहिए इस फैक्ट से कि ही हैज़ अ रूम ऑफ हिज ओन टू लिव. हालांकि उसका जो नेबरहुड है वो वैसा नहीं है जैसा वो चाहता है, बट फिर भी ही मस्ट बी ग्रेटफुल कि आखिर उनके पास एक रूम तो है. अब अल्बर्ट भी यूरी को रिमाइंड करवाते हैं कि इवन दो यूरी लिव्स अमंग पुअर स्टूडेंट्स दे आर ऑल सिविलाइज्ड एंड नॉन वायलेंट. तो यूरी इंटरप्ट करते हैं उनकी बातों को कि नॉट ऑल ऑफ देम हैव मैनर्स एंड ओनली लास्ट वीक वन वाज किल्ड इन अ फाइट. तो यूरी भी यही बता रहे हैं कि जहाँ भी मैं रह रहा हूँ वहाँ का माहौल तुम्हारे माहौल से ज़्यादा खतरनाक है, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल वेयर यू आर लिविंग. अल्बर्ट साइज एट द स्टेट ऑफ स्टूडेंट परसुइंग डिप्लोमा कि और ये स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा ले रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के हालात कैसे हैं. Yuri then gives Albert some hope by saying that he will be a student too, to which Albert expresses his doubtfulness. I don't think I'll ever pass the exams for the school diploma, he told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally, she lived in Berlin, capital of Germany, where her father had a business. But she said, I'm sure you could learn enough to pass the exam, Albert, if you tried. I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. यहाँ पर एल्सा अल्बर्ट को एडवाइस करती है कि मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो एग्ज़ाम्स में क्रैमिंग करके ही पास हो जाते हैं, और वो स्टूडेंट कहते हैं यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बस एग्ज़ाम में जो भी लिखना है उसको रिपीट करते जाओ, उसको बार बार क्रैम करते जाओ. एंड दैट्स द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. कि यही तो ट्रबल है, चीज़ों को बाय हार्ट क्रैम करना, इसमें मैं ठीक नहीं हूँ. नाउ एल्सा अगेन एनकरेज्ड हिम. She said,
यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट कि क्रैमिंग करने के लिए गुड थोड़ी ना होना पड़ता है. एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट. यू जस्ट डोंट ट्राई. अब एल्सा पॉइंट आउट करती है एक बुक को जो कि अल्बर्ट ने अपने पास रखी है. एंड अल्बर्ट टेल्स अस दैट इट्स अ बुक ऑन जियोलॉजी विच इज नॉट टॉट इन स्कूल. ही एड्स दैट दे आर हार्डली टॉट साइंस एट स्कूल. अब एल्जा को समझ नहीं आता कि जियोलॉजी तो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है. इट्स नॉट पार्ट ऑफ हिज करिकुलम. देन व्हाई इज ही रीडिंग द बुक. तो अल्बर्ट क्लैरिफाई करते हैं कि ही लाइक स्टडिंग साइंस एंड कंसीडर इट अ गुड रीजन एनफ टू रीड इट. कि मुझे साइंस पसंद है तो इसे पढ़ने का यही एक अच्छा रीज़न हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि ये स्कूल के करिकुलम में हो. Elsa understands this but also warns him that it's not going to help him in passing his diploma. And that's all for the first part of this chapter. तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग इस चैप्टर की होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बहुत ही फेमस कोट से, दैट इज इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज. And Albert Einstein said it to Mr. Brown, the history teacher in his Munich school. He hated learning dates and facts by heart. He argued that ideas were more important than rote learning. He was not interested in knowing when the battles were fought, but why they were fought. We see that he is frank and straightforward. Even at the cost of punishment, he is not willing to compromise on his views. And his cousin Elsa saw him with a geology book, a subject that was not taught in school. She pointed out to him that it would not help him pass his diploma. It, however, showed that Albert Einstein was a learner and he liked reading what actually interested him. So that's all for the first part. To know more about Albert Einstein, don't forget to watch the second part. Till then, goodbye, stay healthy, and Jai Hind.